Hello and welcome you all to Beat the Street. So today on the panel discussion we have Mr. Rahul Maliwal. He is an All India Rank 1 Chartered Accountant and is a co-founder of Sunrise India Growth Fund, which is a Category 1 AIF, which invests across markets and across industries. Another person we have Mr. Ali Azar. He is also Chartered Accountant and SEBI registered research analyst. He runs a Instagram handle name Mr. Talks. And another person we have is Navid Virani. He is a CFA qualifier as well as well, he is a qualified CFA as well as he is a co-founder of Bastion Research, which is a research analyst firm from Surat and doing multiple research across industries, across sectors, and that's it on the panel side. We are today discussing about the behavioral finance, and Mr. Rahul Maliwal will present the screen of on this topic. So सबसे पहले मैं एक बार थोड़ा सा context set कर देता हूँ because a lot of things a lot of situations takes place when we invest and उसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो है your behavior while you invest because क्या होता है कि यार हर चीज आप बोलते हो कि यार फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया या बहुत सारे रिसर्च हम करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल साइड में हो, टेक्निकल साइड में हो, इंडस्ट्री रिसर्च साइड में हो, बट कहीं ना कहीं बिहेवियर सबसे बड़ा पैटर्न है जो इवन रिसर्च एनालिस्ट या फंड मैनेजर और क्या कहते हैं ना, एक राकेश झुनझुनवाला को राकेश झुनझुनवाला बनाना है या राधा किशन दमानी को राधा किशन दमानी बनाने वाला एक बिहेवियर होता है। कहीं ना कहीं आपको थ्योरी के और प्रैक्टिकल के साथ जोड़ने के बाद आपके बिहेवियर और आपके जो आपके डिसिप्लिन को कंट्रोल में रखना होता है, तब आप जाके एक बेटर इन्वेस्टिंग कर पाते हैं। क्योंकि अगर केवल पढ़ने से या केवल थ्योरी पढ़ने से या प्रैक्टिकल करने से अगर सब कुछ होता तो कहीं ना कहीं हर कोई आज फंड मैनेजर और फंड मैनेजमेंट में और या इन्वेस्टिंग में काफी बड़ा नाम कर चुका होता। बट कहीं ना कहीं कुछ कुछ इंटेंजिबल चीजें होती है जो आदमी को डिफरेंशिएट करती है। सो ओवर टू राहुल भाई, एंड इफ एनीबडी वांट्स टू start, if anybody wants to add something before start, so please. Thank you, Nimish bhai. Thank you, Beat the Street. Can I start sharing my screen? Yes. Okay, is it visible? Yeah. So I'll request Ali bhai as well as Navid bhai also, and even Nimish bhai ki in between the same, because otherwise काफी monologue जैसा हो जाएगा. In between the any of the slide, अगर if you want to add something or if you want to deliberate, though, please come. Okay, so the today's topic is the process of the wealth creation, and the wealth creation via the behavioral finance. So as Nimish bhai said that I got the first rank in the CA. So अगर रैंक आने से अगर पैसा बन जाता देन इक्विटी इज नॉट द प्लेस, बिकॉज क्या होता है ना कि इक्विटी इज द प्लेस, वहां पे आपको रैंक की जरूरत नहीं है. So the genius, यहाँ पे a genius is the man who can do the average things where everybody else around him is the losing is the mind. So the person यहाँ पे average person ही पैसा बना पाएगा, अदरवाइज academic आपके जो भी बैकग्राउंड से है that is not much relevant. और इसका एक one of the great proof है, if you know that अल्बर्ट आइंस्टीन जो उनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, so he invested that Nobel Prize into the equity market and he lost majority of that amount in 1929. जो पैसा अदरवाइज तो अगर साइंटिस्ट वो दैट इज व्हाई इट सेड ना द बेस्ट माइंड कैन मेक द बेस्ट मनी, तो अल्बर्ट आइंस्टीन हैव मेड द टन्स ऑफ मनी, बट द 1929 का जो क्रैश हुआ था उस क्रैश में द मेजॉरिटी अमाउंट इज लॉस्ट, एंड देन ही फाउंड दैट द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड. Those who understand earns it and those who don't pays it. So that is why I believe the behavioral side of this market is more relevant rather than the that is the technical as well as the fundamental. Yes, the fundamental and technical is also very important, but आपका जो behavioral है वही आपका tone set करेगा कि आप किस तरह से wealth create कर पाएंगे. और I believe 60 to 65% of the major wealth is generally made through the behavioral science rather than the fundamental science. Now, as I said, the why behavioral is so important, अगर आज की कंडीशन हम देखें, because we don't know ना कि world is so dynamic and world is so changing. Now what the Trump is making,
25% टैरिफ प्लस 25% टैरिफ, नेक्स्ट डे होता है कि नहीं रशिया से आपने ऑयल बाय नहीं किया, विल डू अनदर राउंड ऑफ सैंक्शनिंग. सो दिस इज सो मतलब सो चेंजिंग. मतलब पीपल always lose the confidence in the companies those which are having the major exposure in US. अगर अभी हम बात करें फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल एज अ सेक्टर. Okay, so textile as a sector की बात करें, so they that hampered a lot because of this Trump tariff, and which is also reflected in the share price performance. Whatever stock, just a disclaimer, whatever stock if we'll discuss over this, it is just for the educational purpose, nothing buy and sell recommendation. Do your own due diligence. So, and I am also not a SEBI registered research analyst. So, for example, अगर मैं बात करूं जैसे गोकुल दास एक्सपोर्ट है, okay, so the share price corrected from 1100 to 700. People are considering कि नहीं 30%, 40% of the business will be gone because of this US tariff. Yes, it will be impacted, बट वाई यू बिहेवियरल पार्ट इज सो इम्पोर्टेंट. अब यहाँ पे आपको एस्टिमेट करना पड़ता है कि यस कि ये जो इम्पैक्ट आया है इट इज गोइंग टू बी द परमानेंट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस और इट इज द टेम्पररी. तो परमानेंट और टेम्पररी करने के लिए सबसे पहले डिस्ट्रप्शन समझना पड़ता है. डिस्ट्रप्शन इज द ट्रम्प. ट्रम्प को तो कोई समझ नहीं सकता, बट वेदर द बिजनेस इज सो डायनेमिक कि वो चेंज हो जाएगा या नहीं होगा, या फिर ये एक मैक्सिमम 1 या 1.5 साल का लेग रहेगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. तो अगर मैं उस बिजनेस का साइंस देखता हूं तो दे डू दे हैव द कैपेसिटी ओनली इन इंडिया. यहाँ उनकी दूसरी भी फैक्ट्रीज है, फॉर एग्जांपल अफ्रीका में है, केनियाज में है. यस, दे हैव द फैक्ट्रीज इन द अफ्रीका एंड केनिया. कैन दे शिफ्ट देयर प्रोडक्शन लाइन ऑफ द सप्लाई फ्रॉम इंडिया टू यूएस की जगह वो केनिया या अफ्रीका से कर सकते हैं. सो इट मे टेक सम टाइम. ऐसा नहीं होगा कि 5 या 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा. मे टेक सम टाइम की 1 साल का ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1.5 ईयर के अंदर शिफ्टिंग होगा. बट दे कैन डू, यस, इफ इट पॉसिबल फॉर देम टू डू द शिफ्टिंग. और जहां पे टेरिफ इंपैक्ट लोअर है वहां पे 10% है, विच इज इवन लेसर देन द बांग्लादेश, जो हमारा मेन कंपटीशन है बांग्लादेश से. सो वहां से तो इट इज पॉसिबल फॉर देम टू शिफ्ट. यस, इट इज पॉसिबल, बट द पेन इज विजिबल कि 1 साल का पेन हो सकता है. तो इन्वेस्टर मतलब इस तरह में जो वेल्थ क्रिएट होता है वो इसी तरह से होता है, क्योंकि आपको जो भाव है वो कभी भी फेवरेबल सिचुएशन में नहीं मिलेगा. आपको जो पर्टिकुलर प्राइस है जहां पे आपको मैक्सिमम मार्जिन ऑफ सेफ्टी है प्लस मैक्सिमम ईपीएस री रेटिंग होगा, तब जो डिप्रेस सिचुएशंस होगी, डिप्रेस सिनारियो होगा, तभी मिलेगा, अदरवाइज आपको भाव नहीं मिलेगा. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि भाई, a genius who loses the control of their emotion can be a financial disaster in this equity market. And the opposite is also true. जो ordinary folks है which have no basic financial education, but which has the control on the emotions and understanding of the behavior, can make tons of money in this market. So that is the aspect. With this we start with the presentation. Now, so behavioral finance is a very big subject, but what the basic consideration that I like most is are those collaboration versus contrarian. First, second one is system one, system two. Third one, survivalship bias. Fourth, sunk cost fallacy. Fifth, prioritize the risk management. Sixth, selling wisely. Seventh, fooled by IPO randomness. Eighth, danger of over diversification. Ninth, tails you win. And 10th one is the reasonable is greater than rational in this. Otherwise, also there are so many things to consider. There are so many analogies in the behavioral finance, but I'll broadly cover all this particular aspect. राहुल भाई, ये जो आपने जो इतने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं वो काफी यू कैन काफी वापस से एक बार अगर आप वो प्रेजेंट कर रहे हैं. So actually, I was going so fast because I have to cover this. So we will cover one by one. हम वैसे Okay, भी so these are one by every these are topic the is bullet points. These are the bullet points that okay. will going to be covered. So first one is Okay. the collaboration versus contrarian. So the collaboration versus contrarian says is a Harari experiment that has been done कि human का जो psychology होता है ना, we all are very collaborative in the nature. कोलैबोरेटिव यानी वी आर द सोशल कोहेरेंस की जरूरत होती है. वी ऑलवेज फाइंड टू गो कि हाँ यार कि व्हाट आई एम डूइंग, कि मैं वही तरह का बंदा ढूंढता हूँ जो मेरी तरह काम कर रहा है. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम होल्डिंग रिलायंस, तो आई विल ऑलवेज गो टू फाइंड आउट द ट्विटर पे जाऊंगा, टेलीग्राम पे जाऊंगा, सोशल मीडिया पे जाऊंगा, फाइंड आउट कि और रिलायंस किसने बाई किया है. ओके, फिर उसकी एनालॉजी पढ़ूंगा. यस, रिलायंस क्यों बाई किया है, बिकॉज क्या हुआ, जियो का लिस्टिंग होने वाला है, रिटेल डीमर्ज होने वाला है, बड़ा लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दे आर डूइंग. फिर उसके बाद में जामनगर रिफाइनरीज के अंदर जो है वहां पे वो कुछ नया चेंजेस करने वाले. सो मतलब आई विल गो एंड फाइंड आउट दोस पर्सन दोज हु आर डूइंग द सेम. भाई अली भाई ने कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला है क्या कि जहाँ पे उन्होंने रिलायंस के अंदर बारे में बताया. सो मतलब दिस इज द सोशल कोहेरेंस विच वी से, एंड इट इज बीइंग प्रूव्ड कि यहाँ पे अगर आपको
डेजर्टेड आइलैंड है फॉर एग्जाम्पल, और वहां पे अगर आपको 100 ह्यूमंस टू सर्वाइव है, और वहां पे क्या होता है, 100 ह्यूमंस को छोड़ दिया डेजर्टेड आइलैंड्स में, एंड इट टेक्स द 18 मंथ्स फॉर द, अज्यूम करते हैं 12 to 18 मंथ्स आपको रेस्क्यू टीम आएगी वहां से रेस्क्यू करने के लिए, देन ऑल्सो यू विल सर्वाइव बिकॉज वी वी कनेक्ट विथ ईच अदर वेरी गुड। लेकिन इन्वेस्टिंग के अंदर है दैट वी नीड, व्हाट वी नीड इन द इन्वेस्टिंग इज द कॉन्ट्रेरियन एस्पेक्ट। कॉन्ट्रेरियन यानी वी नीड टू बी कॉन्ट्रेरियन विद द अदर पर्सन की यस, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ टॉक इज गोइंग ऑन विद रिगार्ड टू द रिलायंस, देन देयर शुड बी सम प्रॉब्लम, देयर शुड बी, देन आई एम नॉट सेइंग कि कंपल्सरी वहां पे प्रॉब्लम होगा ही होगा, बट देयर शुड बी सम प्रॉब्लम बिकॉज लॉट ऑफ पर्संस आर ऑलरेडी कवरिंग दैट रिलायंस, दैट मींस जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको नहीं मिलने वाला है, वहां पे क्या होगा, प्राइस टू परफेक्शन होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज डिस्कवर्ड, एवरीथिंग इज वेल नोन, बिकॉज अभी तो वैसे भी आपके पास इंफॉर्मेशन एज तो रहा नहीं है, इंफॉर्मेशन तो लाइट की तरह, एकदम लाइट और साउंड की तरह फास्टली सभी के पास जाती है, सो वहां पे वो तो रहा नहीं, सो दैट इज व्हाट इज द एज, इज द एनालिटिकल एज, एनालिटिकल में भी एवरीबडी इज नोइंग अबाउट द सेम, तो वहां पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होगा, तो वहां पे आपका कंपाउंडिंग रिटर्न कैन बी देयर 12%, 15%, यू कैन कंपाउंड योर वेल्थ। बट अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स चाहिए, तो आई बिलीव दो तरह की री रेटिंग होनी चाहिए, एक तो ईपीएस री रेटिंग भी होनी चाहिए और साथ में वैल्यूएशन री रेटिंग होनी चाहिए, तभी आपको एज मिल पाएगा, दैट इज द वैल्यूएशन री रेट प्लस एज वेल एज ईपीएस री रेट, एंड राहुल भाई, अब फॉर तो दैट एनालिटिकल एनालिटिकल कहते हैं ना, एनालिटिकल स्किल भी वो हो गई है, कमोडिटाइज हो गई आफ्टर एआई। आजा, सो so that is also that is also a big risk now, so that in that particular case we need to be socially contrarian। अगर just to give an example, वो तो सभी के पास होंगे कि रिटेल शेयर होल्डिंग इंक्रीज होना is also one of the signs of danger। Yeah, we have so many examples, yes bank, DHFL, फला फला, मतलब we have so many examples to consider this, कि भाई रिटेल शेयर होल्डर इंक्रीज हो रहे हैं, that means there is some sign, yes this information is flowing fast to the retail shareholder, there can be a trap in the same। So first of all, you need to be very contrarian while investing, you need to be find out such type of information, such type of stock जहां पे अभी किसी की नजर नहीं है, why it is because depressed, हो सकता है कि ट्रम्प की मार के कारण वो टेक्सटाइल सेक्टर में हो जहां पे बहुत डाउन हो, जहां पे हाँ हो सकता, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसी कंपनीज मिले, यू नीड टू फाइंड आउट सच कंपनीज विच आर गुड इन बैलेंस शीट, और जिसकी बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, तो उस केस में क्या होगा, दिस टाइप ऑफ सिचुएशन विल बी द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर देम, because they can capitalize their strength of the balance sheet into the business। हो सकता है जो 10th 9th और 8th 9th 10th नंबर पे जो कंपनीज है, दे मे वाइप आउट, बिकॉज उनकी बैलेंस शीट इतनी लीवरेज नहीं कर पाएगी, सो दे विल गो, दे विल बी मोर, आई वुड से दे विल कैप्चर मोर मार्केट ओवर द पीरियड ऑफ 1.5 ईयर। सो आपको उस तरह की कंपनीज देखनी है जहां पे दोज विच आर नॉट बीइंग कवर्ड बाय द अदर पीपल। So this was second concept is the system one and system two. Everybody I think must be aware about Daniel Kahneman, the system one and system two. What is system one and system one is very fast, automatic, that is effortless, emotional. So, and the system two is the slow, deliberative, which is effortful, logical। So एक human there is a human brain का जो portion होता है, if you consider the human brain, that it is only 2 or 3% of your body weight, but it consumes 25% of the energy of the body। सो 25%, 25% अगर आपका बॉडी का एनर्जी वो कंज्यूम करता है, देन इट मेक्स द एंटायर ह्यूमन टू बी बिकम अ लेजी। वो क्या करता है, दैट फाइंड आउट्स टू बी टेक्स द शॉर्टकट्स, तो वो वर्क्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम वन। सिस्टम वन क्या बोलता है, दैट इज वेरी फास्ट, ऑटोमेटिक, ट्रम्प टेरिफायर, मतलब एनी अनफोर्सिन सिचुएशन आई, you just get out from that particular stock, 20% down, 30% you find out, अरे ओके ये टेक्सटाइल तो गया, आप खत्म हो गया। System will tell you nothing is going, now nothing will happen in the textile, textile is a gone sector, it is down, it is ended like anything, so you just get out from that particular stock। but what is system 2? System 2 is the slow and deliberate। वो आपको बोलेगा कि नहीं, you have to analyze this particular thing with the different dimensions, with the different possibilities and with the different outcomes, and what we need in this investing journey is to be a part of system 2 rather than a system 1, working as a system 1। for example, हम जनरली इन्वेस्टमेंट जो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम 1, दैट इज अभी जो हॉट सेक्टर्स चल रहे हैं, BESS, बैटरी एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, बैटरी केमिकल्स। ओके, बैटरी केमिकल्स इंडिया में
number of companies, they are coming with the 2000 crore investment, 3000 crore investment. Okay, but सिस्टम टू, और यू आर इन्वेस्टिंग ऑन द, वो अनाउंसमेंट के बेसिस पे 10%, 20%, 25% शेयर स्टॉक भाग जाएगा. बट व्हाट इज द सिस्टम टू? सिस्टम टू विल टेल कि पहले एनालाइज तो करो वेदर यू हैव एनी सम बैटरी मैन्युफैक्चरर हु विल बाय दिस पर्टिकुलर बैटरी केमिकल्स. अभी इंडिया में वो इकोसिस्टम ही नहीं है कि दे आर विद द बैटरी मैन्युफैक्चर, देयर इज अ बैटरी मैन्युफैक्चरर. सो अभी जो सारी बैटरीज बन रही है वो चाइना में बन रही है, एंड चाइना विल नॉट गोइंग टू बाय योर केमिकल्स. आपका जो केमिकल है वो चाइना बाय नहीं करने वाला है. So you need to have first battery ecosystem in India. Just to give one of the example, जो ecosystem basis के ऊपर है EV charging station, one of this company that is Exicom. It is only again educational purpose. Okay, social media crazy. अब जब ये IPO आया था, it everybody was crazy कि यार this is the battery and ये क्या बोलते हैं अपना EV charging system, दे टाटा का सारा सप्लाई ये वो, they will get they will capture 55% market, and the management was also promising कि we will grow by 55%, 60% year on year, 60% year on, but nobody was caring about the fundamentals. मतलब जो system 2 बोलता है, एक बार बैठ के थोड़ा कैश फ्लो तो देख लो, बैलेंस शीट तो देख लो, nobody was considering the same. And what happened? Last 5 year cumulative cash flow is negative, operating cash flow is negative. आप 5 साल का ऑपरेटिंग क्यूमुलेटिव कैश फ्लो भी देख लो, नॉट ईयर, लास्ट ईयर cumulative cash flow is negative, and the stock from I think 480, 500 to now it is 140, 150, but struggling at 140, 150, and a lot of money has been destroyed in this particular type of stories. So whenever we are investing on the basis of some information, that is system 1, जहां पे बहुत fast and furious decision ले रहे हो, you will end up making losses. I तो think आपको one more example can be taken of Coal India. सो कोल इंडिया में मतलब पिछले अगर हम 3 साल से पहले देखेंगे तो कोल इंडिया को लोगों ने बिल्कुल डिस्काउंट कर दिया था कि इंडिया में कोई थर्मल एनर्जी से एनर्जी नहीं बनाएगा, जबकि वी आर अगर हमारा करंट कंपोजिशन भी देखें, मोर देन 50% ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी इज कमिंग फ्रॉम थर्मल सोर्सेस, नॉट renewable energy. We are shifting, gradually shifting, but we are not completely dependent on renewable energy. Now this is on the fast pace, but you cannot ignore what Coal India has done for India. And अभी भी जितना डिमांड जिस स्पीड से बढ़ रही है, यू कांट इग्नोर थर्मल एज ऑफ नाउ ऑल्सो. सो आई थिंक वो जो यू आर सेइंग कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2, आई थिंक सिस्टम 1 के कारण लोगों ने कोल इंडिया छोड़ दिया था. एंड आई रिमेम्बर मिस्टर राजीव ठक्कर फ्रॉम द पराग पारिक म्यूचुअल फंड, ही bought that company at around 8, 7-8 multiple. And then people started realizing कि यार वही 50% तो रेवेन्यू अभी भी, मतलब 50% ऑफ आवर एनर्जी इज स्टिल कमिंग फ्रॉम थर्मल. सो आई थिंक दीज थिंग्स हैपन्स नाउ, एंड then we need this to is take care of it. and this will going to happen every time. मतलब जो स्टोरीज जल्दी होगी, जो फास्ट होगा, फ्यूरियस होगा, सोशल मीडिया में होगा, सो इट विल बी, मतलब वो डार्लिंग होगा मार्केट का. सो दिस वाज सेकंड. द थर्ड वन इज सर्वाइवलशिप बायस. ये बहुत ही गजब का फ्रेमवर्क है. लॉन्ग इक्विटी इज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. एवरीबडी सेज लाइक बाय राइट सिट टाइट. यस, आप 10 साल 20 साल अगर आपने HDFC बैंक बाई करके लिया होता, आपने 25 साल पहले एशियन पेंट बाई किया होता, सो आपका वेल्थ इतना होता. यस, बट आई वुड से कि इक्विटी इज नॉट, मतलब इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज द लॉन्ग टर्म. ओके, यू कैन मतलब वहां पे आप टाइमिंग करोगे कि व्हेन द market at the peak I'll get out, when the market is at the lowest point I'll come in, so it will not going to happen. But equity as an investment is a long term, but shares are not always a long term. So this is so dynamic world. वहां पे आपको you have the agility to change yourself. अगर आप सर्वाइवलशिप बायस रखोगे, नहीं 25 साल तक अगर मैंने एशियन पेंट बाई किया एंड इट मेक्स टन्स ऑफ मनी, तो लास्ट 5 साल 7 साल में कुछ भी नहीं बना. I लास्ट think 5 साल. this holds more true in today's day and age. Maybe this Yes. was like, as in survival bias, maybe you could have gotten away with it in the 70s and 80s and all, but in today's day and age is so dynamic and things are changing because there is so much more participation from wider sources also now, that you cannot have survivalship bias, especially in today's day and age. Yes, and we have the classic example, Hindustan Motors. जो they were the manufacturer of the
ambassador, the one of the premier car in the India. Who knows कि 30 years 40 years बाद वो totally wipe out हो जाएंगे. So survivalship bias you need to be remove out from your mind कि every stock whenever you are buying you must to first of all whenever you are buying any stock you have some thesis on the same. You have to write down that particular thesis कि why you are buying, whether the valuation is cheap, whether you see the opportunity is very good, and you need to constantly evaluate that particular thesis with the current market situations. हो सकता है आपने जो स्टॉक बाय किया और यू आर फाइंडिंग आउट कि नेक्स्ट 5 years में इसका वैल्यूएशन इतना होगा, बट मे पॉसिबल वो 7 months 8 months में ही वो वैल्यूएशन, इफ यू गॉट दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन you have to shift your position because we have the limited capital and there is a concept of the opportunity cost. अगर next 4.5 year में आप उसको लेके भी बैठे रहोगे और you are not making any amount of the money and you think the valuation is already capped, then you have to shift to the another stock. So there is no point कि नहीं ये मेरे को 6 months में पैसा बन गया है तो I need to ride this particular stock for a longer period of time. The next one is sunk cost fallacy. So what generally people do, people value the current market price to the investment cost. And in CA or in a costing also, there is a concept of the sunk cost. The price you paid is already given. So that is your sunk cost. Now, when you are comparing your current market price with the total investment cost, that is useless. That is useless because क्या होगा, people what the people do now, for example people bought the Exicom for let us say for 500 rupees, okay, फिर उसके बाद में वो negative cash flow continue हुआ for 1 or 2 year. Now the share price falls to the 300 rupees, but the people were thinking यार I bought at the 500 rupees, I'll get out of this particular stock at the rate of 500 only, I'll not book losses. Then क्या हुआ, then stock went further, वो क्या हो गया, वो fall further हुआ और वो 150 rupees हो गया. So this is the one of the basic logic, or that is sunk cost fallacy. So people generally don't understand why you comparing your investment cost with the current market. Whatever the price you paid, the same happen with the depreciation also. What is the depreciation? Depreciation is sunk cost. Depreciation is sunk cost, and what the people used to check, okay, profit and loss, because when we compare the PE, price to earning, the one of the component is the depreciation. If the depreciation is inflated because the company has made some capital expenditure, then the earning will be automatically depressed. So earning depressed होगा तो आपका PE higher होगा, but there is nothing to do with the working because the cash expenditure is already done. So the sunk cost fallacy says rather than going with the whatever price you paid, you compare with the opportunity. What best opportunity you have. For example, if my share price fell to the 300 rupees, then compare that 300 with the future earnings of that particular company. If you feel that no, we have some better opportunity at this price, this company grow with 10-15% and we have the opportunity to get 20%, 25% somewhere else, then it is better to shift that particular holding. Anything? So this is my class. Yes, please go ahead. So I think this is sunk cost. Sorry. Just to complete this is the classic the Craftsman automation. Okay, so this company is in the auto ancillary. So we bought around this Craftsman around 7-8 months back. Well, the logic of this was only because of sunk cost. The depreciation was very high. Because of the depreciation, earning was depressed. At the same time, company was making capital expenditure of 50% of the gross block. What the company is having the gross block, they were doing the future expenditure of 50%, and for that the depreciation was started. The commissioning, the production was to come within the 8 to 9 months. At the same time, the company was telling in their transcript in the management call that we need to do some pre-operating expenditures. Pre-operating expenditure, that is 15 to 20% of their current expenditure. So that is why we bought कि भाई हाँ यहाँ पे जो future earning, but the market is not considering the future earning. Market is discounting this because the market is saying okay, जो उनका जो profitability है, that is being depressed like anything. जो 20% 22% margin करते थे, now the operating margin is 15% only. So on the sunk cost fallacy only we bought this particular stock
we were hoping in the times to come 2 or 2.5 years, it will be around 6500 7,000 stock. But within the 7 to 8 months, it has becomes now 6500 7,000 rupees, and we get out this particular. So after our exit also, हमने कुछ 6700 का exit लिया होगा, then also it is moved. But we were thinking कि yes, now we have some better opportunity to find out. So वहां से हमने money shift किया. But the pure play, मतलब the pure exercise that we have done on the craftsman was the sunk cost. Yes, that because of depreciation, because of the expenditure, that nothing to do with the current future cash flows, the earnings are depressed. So we bought the same. Yes, please, Navid bhai. No problem, Rahul bhai. I'm just writing things down. I'll give all my inputs at the end. I think that would be best, Okay. not to stop your flow. So this was the next one is the prioritize the risk management over the multi-bakers. So what we found that generally people are more crazy with the multi-bakers. They want next multi-baker. What is okay? Please give me the next multi-baker जो 2 साल के अंदर 5x हो जाएगा या 10x हो जाएगा, इस तरह की इन्वेस्टिंग स्टोरीज आएगी. फिर उसके इसमें क्या होता है कि whenever you are finding our multi-baker, you are distorting your thinking. You are even distorting your attempts, your process of making the investment, your thesis of making the investment. Because if you have some thesis, I will buy the particular stock on the basis of earning, on the basis of the valuation, on the basis of the re-rating. But what the people used to find out, what is the crazy, what is the crazy next items like जैसे BEES हो गया या फिर आपका for example, so the theme of that is power infra हो गया, battery chemicals हो गया. So on that particular way, they are going for the multi-bakers, or that will distort the process of the investing. और वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका पैसा definitely you will erode your capital. So we believe what we consider that is the investing is always the gram of probability, because you will never write. और यहाँ पे आपको करना क्या होगा, whenever you if you wanted to be succeed in the investing, you are supposed to make the odds in your maximum odds in your favor. जितने odds आप आपके फेवर में कर सकते हो, then that will give you the margin of safety. आपके लिए room of error का chance रहेगा, आपको एक margin of safety रहेगी. So for finding, we never go for the multi-bakers. We never emphasize the multi-baker. What we consider how to get the multi-baker, you find out some of the business are good, businesses are generally doing good, and they are into the depressed situation. अब वो depressed situation कोई भी हो सकती है, that is the external situation हो गया या political situation, मतलब any external out factors हो गया या फिर internal factors हो गया या फिर the company is doing something some into the new areas. For example, if I talk about the Laurus Labs, just again educational purpose, that is a 300 rupees 2021 700 rupees का stock था, that went below up to 300 rupees. The reason was they were transiting from the ARV business to the non ARV business, जो CDMO में और उसमें consideration कर रहे थे. But people fails to understand. People were saying no, ये तो एक उसको एक लेबल मिल गया था सोशल मीडिया में, that is the Laurus Lab नहीं है, वो क्या है, बोगस लैब है. So whenever even Sandeep Tandon makes a very good statement. Sandeep Tandon of Bond Fund. He says we are in the business of risk management. Returns are a byproduct. Returns are always very good. That is we are into the equities. Investing is always the managing the risk. The returns are always the byproduct. You will get the returns अगर आपने risk अच्छे से manage कर लिया तो. Even sometimes simple businesses also make a great amount of returns. But people just think about कि यार नया hot sector क्या है. Mostly simple businesses only make the boring businesses money. make the good returns. All these fancy businesses usually they are down. So that is always the case. So so we need to prioritize the risk rather than finding the multi-baggers. The next is the dark continent of the investing, that is the selling wisely. So when to sell, how to sell is also very important. कि आपको कोई स्टॉक आपने राइड कर रहे हो तो when to sell. So technically if the person who is having the technical expertise, then they knows कि कहाँ पे उनका bottom आया, whatever the resistance, that is okay. But in case if you are for the long term investment, then when to sell is also important. So I believe that whenever there is a change in thesis, because whenever you buy any stock, you have to write down your thesis. आपने आपका thesis लिखा होगा कि why I am buying this particular company. So what is my understanding of this company? Because first, there may be a situation that it is going to be from the depressed situation.
यहाँ पे अर्निंग डिप्रेस्ड हो गया, या फिर फॉर एग्जांपल इफ इट इज लॉरस है, माय कंसिडरेशन ऑन I even bought the shares at the 700 peak also and at the 300 also. The reason of 300 was that ki nahi, the company is shifting its non ARV business to non ARV. At that time it was say I was in 20, if I am not mistaken, 2021 the 60% of EBITDA contribution was from the ARV business, and today the companies get 30%, only 30%, 25 to 30% is from the ARV business, and the rest 60 to 75% is from the that is CDMO businesses. And so you need to write down the thesis, what thesis you have bought. But if the thesis is not proper, या फिर वो जो अपन ने हमने सोचा था वो नहीं हो रहा है, then you have to sell that particular stock. There is a no point कि उसको आप write करते रहो. Second, if the valuation at the time you bought the stock was available at the very low valuation, for example, Newland Lab, at I think in 2029 or 2020 it was available at less than one time price to sale, less than one time price to sale, and in 2025 it is becomes 18 times or 17 times, 18 times price to sell, so that the valuation becomes very crazy. Then going forward it is, we have some better opportunity, because क्या होता है, we need only 25 to 30 stocks for the investing. वो 5,000 6,000 के यूनिवर्स में आपको 25 से 30 स्टॉक चाहिए. सो 25 से 30 स्टॉक में हो सकता है, बिकॉज आपका ये जो इन्वेस्ट है वहां से आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, बिकॉज द वैल्यूएशन बिकम्स क्रेजी, देन यू सेल द स्टॉक. एंड बिकॉज द थर्ड वन इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट आई मेंशन, इफ यू गॉट द बेटर अपॉर्चुनिटी. सो अगर ये 3 से 4 सिचुएशन में कोई भी अकर होती है, देन यू नीड टू sell the stock very perfectly. The people fails to do the sell the stock when there is a change in thesis, because when, for example, if I consider again the Exicom stock, 505, the management was kept telling him I'm 50%, 60%. One of the stock also, that is the MTAR. Again, darling of the social media or even the TV anchors. Okay, तो वहां पे क्या था कि MTAR में वो guidance kept revising 50%, 60% CAGR growth होगा. And on that particular front also, the promoter is selling constantly their stake. आई थिंक 3000 पे भी कुछ प्रमोटर ने स्टॉक में सेल किया था, फिर देन 2600 पे सेल किया था, एंड दे वर नॉट डिलीवरिंग द एस्पेक्ट. 50% 60% का जो ग्रोथ था, दे वर टॉकिंग अबाउट 50% 60% ग्रोथ, एंड द कंपनी वाज डिलीवरिंग अराउंड 5 to 6%. But every quarter they used to come on the TV media and they used to tell, no, from the next quarter we will go with the 50%, 60%. And if you look at the graph of the retail shareholder, it was increasing like anything. At the time of selling, the people started buying. So the selling wisely is very important in the investment. It is not only that कि आपने कोई good investment कर लिया है उसको राइड करते रहोगे, आपको उसको वापस से कब सेल करना है, it is also very important. I think a very relevant example over here is the Gensol case. That promoter. That is going to come. Oh my God. That is going to come. Jansol. The next one is the fooled by IPO randomness. So many times people used to go crazy with the IPO. और पीपल बाय करते हैं विच आर द जो अभी जो नई लिस्टिंग हुई है, एवरी टाइम द पीपल थिंक यार जो न्यू लिस्टेड हुई है कंपनी, इट इज गोइंग टू मेक द, बिकॉज वहां पे ही सोशल मीडिया कहीं पे भी मैक्सिमम बज होगा, द मैक्सिमम बज विल बी ऑन दैट पर्टिकुलर आईपीओ जो रिसेंट लिस्ट हुआ है. बट वी बिलीव दैट देयर इज अ 3 point. The first of all, IPO है, that is on the seller's advantage, because the company owner is knowing what is the best price they are getting, and beyond that it is not possible for them. हो सकता है देयर में भी फ्यू एक्सेप्शंस होंगे, डीमार्ट वीमार्ट जैसे, बट देयर विल बी फ्यू एक्सेप्शंस होंगे. सेकंड, इंफॉर्मेशन एसिमेट्रिक होती है, बिकॉज द सेलर हैव द far more knowledge about the business, because you do not have any track record of the 8 to 10 years, so you do not have maximum amount of the knowledge about that particular business. Third one is the business valuation is crazy. अभी जो recent listing हुआ Anthem Bio, the company is again the company reported very good earning, the company is super. There is no doubt the company is super, but the company is trading at the valuation of 20 times price to sale. The asking price itself is so high कि ये, और the CDMO business is the so lumpy, so random. वहां पे आपको फिर अगर if you are paying 20 times price to sale for a company, so that means there is a zero chance of room of error. आपके पास कोई room of error है ही नहीं. अगर एक भी क्वार्टरली अर्निंग गलत आया, देन 10, 20, 30% गॉन, जो अभी हुआ है ब्लू जेट के साथ में, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट. पीजी इलेक्ट्रोपायर,
ब्लू जेट ऑल्सो, if you consider the blue jet, अगर आप उसमें देखोगे ना, so any CDMO company, good CDMO company will be having approximate 12% to 18% to expenditure of the employee cost, because they need to have the some scientist. If you look at the blue jet का चार्ट देखोगे, वहां पे blue jet के अंदर जो employee cost है ना, that is only 4 to 5% of their total sale. तो मतलब या तो दूसरी सारी कंपनी गलत है जो 15 से 18% खर्चा कर रही है एम्प्लॉइज पे, मतलब साइंटिस्ट पे, या फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंट है. बट हो सकता है देर में भी. सो इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी. देर मे बी पॉसिबल की ना, देर कैन बी द पॉसिबिलिटी की दे कैन वर्क विद द लो एम्प्लॉय, बट वहां पे अगर आप आस्किंग प्राइस 10 to 12 टाइम्स प्राइस टू सेल दोगे और एक भी क्वार्टरली गलत हुआ, then you will be gone. So same, so what we feel कि that is a IPO, whenever there is a IPO narrative और जहां पे वैल्यूएशन बहुत क्रेजी है, you have to be avoid that particular IPO. और IPO जनरली तभी आएगा जहां पे वैल्यूएशन क्रेजी है. 2021 के अंदर ये दो IPO, नंबर ऑफ IPO थे उस टाइम पे केमिकल में. वन ऑफ दोज आर तत्व चिंतन एंड द क्लीन साइंस. एट द पीक ऑफ द IPO, एट द पीक ऑफ द केमिकल बूम, तत्व चिंतन 2000 रुपीज पे ट्रेड कर रहा था, आज तक वो प्राइस नहीं आया. सेम विद द क्लीन साइंस. क्लीन साइंस बेस्ट इन क्लास मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज गुड, बट द वैल्यूएशन इज नॉट गुड. तो जो आईपीओ का जो प्राइस था, आईपीओ पे जो लिस्ट हुआ प्राइस, वो आज तक 4 से 5 साल हो गए, अभी तक नहीं आया. सो दैट इज व्हाई वी फील कि whenever you are buying any stock of the IPO, you need to be double check. आई थिंक एक और चीज जो आईपीओ में हम कर सकते हैं वो है कि यू नो because there is a anchor, there is a pre-IPO investor also. So you can, just wait for 6 months or 1 year after the IPO. So you will see the execution, you will see who is exiting the stock and who is the new buyers. So you also understand that shareholding pattern कि यार कौन घुस रहा है, क्या हो रहा है. क्योंकि क्या होता है ना, 1 साल तक तो पूरा वो बूम लॉक इन पीरियड के कारण कोई बेच नहीं सकता है. बट जैसे जैसे लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे बहुत सारे एंकर्स एसएमई में और मेन बोर्ड में केवल दे जस्ट बाई टू सेल द स्टॉक एट आफ्टर 3 months और 6 months. निमिष भाई, दैट इज ऑल्सो पॉइंट कि आप एसएमई में यू कैन ट्रैक कि ओके 70% 80% में क्या होगा, द एंकर एंड द एवरीवन विल एग्जिट आफ्टर 3 months, 70-80. बट व्हेन यू कंसीडर द मेन बोर्ड आईपीओ जो होगा ना, फॉर एग्जांपल अभी एंथम बायो की मैं बात करते हैं, वहां पे सारे म्यूचुअल फंड्स है, एवरी म्यूचुअल फंड यू फाइंड आउट, एनी म्यूचुअल फंड, सभी म्यूचुअल फंड्स है, बट दे डोंट केयर ना यार. अगर उनका 5,000 करोड़ का पोर्टफोलियो है, if any fund manager is managing 5,000 करोड़ पोर्टफोलियो, उसने 5 करोड़ 10 करोड़ कोई XYZ आईपीओ के अंदर लगा भी दिया है, तो उसके परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. Yeah, I think this method of waiting for about 6 months, 1 year is the correct way. And that's why I prefer, like a merger rather than, sorry, a demerger happening. Then you buy the demerged companies. Like right now, Siemens Limited and Siemens Energy has demerged. So I would rather buy a Siemens Energy over there rather than if Siemens Energy was coming out as an IPO. That's at least the way that I look at it. So there's more history of the parent company and execution. You can track the execution of that within the parent. सेम वे अभी जैसे हम आईपीओ आया कंपनी का, और उसके बाद आप मतलब जस्ट डोंट गो टू बाय द स्टॉक, जस्ट वेट फॉर 1 year, एग्जीक्यूशन आने दो, नंबर्स आने दो. एक बार जो उन्होंने बोला आईपीओ में हम क्या करेंगे उस पैसे का, वो एक बार नंबर्स में रिफ्लेक्ट होने दो, एंड देन यू कैन बाय. तो ऐसा तो है नहीं कि ये स्टॉक वापस कभी नहीं मिलेगा, जैसे you, क्लीन साइंस you, आप बता रहे हो, तत्व चिंतन आप बता रहे हो. I you was will at, get lot of time. to be मतलब फॉर honest, एग्जांपल I was really tempted by this one IPO stock, Belris, which is an auto component maker, and I was really tempted, but somehow I just laid my hands off it, and I'm just waiting and watching. It's been like a couple of months only it's come out, and they've declared their first results, which were actually quite good also. And now after a long period, auto component sector is also starting to show some kind of strength. So I was very tempted to buy it, but I've waited till now. Let's see how it goes. तो दिस इज गोइंग टू हैपन आईपीओ विद में एवरी. दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा, मतलब there are two frameworks which one can use. One is the full form of IPO is theoretically initial public offering, but jokingly a lot of people say it's probably overpriced. So I think that is one important framework which one needs to keep in mind. And secondly, I think a lot of companies which are getting listed आज की तारीख में, उसमें बहुत सारे कंपनीज को प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनीज की बैकिंग मिली हुई है. These guys are really smart and they understand how the market works.
and there is very little and they are looking for exits for their investors. So there is very little probability that they'll leave any money for investors. अगर कोई promoter अपना stake offload करके list हो रहा है, who wants to run the company for the long haul, there's a good probability that that person will leave some money of, on the table. I think there's a very famous story, Infosys का, ADR या कुछ list हो रहा था या कुछ, I've overheard it. So the company deliberately kept some money on the table कि ठीक है, we know this kind of price we can get, but we deliberately want to be, list at a lower price because our initial investors, don't, they get disappointed at the first day. But private equity guys and venture capitalists are not going to think that way. So I think ये दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग में रख के आईपीओ को देखना चाहिए. Lot of interesting companies are coming, but ये चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए. तो और यू विल गेट द टाइम, जैसा अली भाई ने बोला ना कि यू जस्ट नीड टू वॉच आउट, आप उसको वॉच लिस्ट में रखो, यू विल गेट द टाइम. जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी जो रिसेंट 1-2 साल पहले सुप्रिया लाइफ साइंसेज वाज द आईपीओ, ठीक है. तो सुप्रिया लाइफ साइंसेज वाज लिस्टेड एट द वेरी हैंडसम प्राइस, फिर उसके बाद में 600-700 हुआ, देन अगेन आफ्टर 1 ईयर वो वापस से 250-300 पे आया. Now at the time of that, if your thesis is ready, your investment thesis is ready, your every working is ready, सब कुछ अगर आपके पास है, then you can invest on those particular company, और जहां पे एटलीस्ट वापस से वो साइन ऑफ रिवाइवल होगा. बट डायरेक्टली अगर आईपीओ आया और आप अगर उसको बाय कर लोगे, then 90% ऑफ द चांसेस है कि यू विल हैव इधर टाइम करेक्शन हो. अगर प्राइस करेक्शन नहीं हुआ, गुड कंपनी है, तो टाइम करेक्शन होगा ही होगा. Right. Next is the danger of the over diversification. Diversification is good. You need to be diversified because क्या होगा, diversification है, then there is a मतलब वहां पे आपके पास chances रहेगा कि you will not end up losing money. अगर आपका 25-30 स्टॉक का अगर आपने डाइवर्सिफाई कर दिया है, तो 5 से 6% मैक्सिमम 4 से 5% आपका एक अलोकेशन है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्टॉक, देन इट इज गुड. बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन, मैक्सिमम इन्वेस्टर्स को हम देखते हैं, दे हैव होल्डिंग 50 स्टॉक, 80 स्टॉक या 200 स्टॉक, तब फाइन. और फिर क्या होता है कि बहुत सारी तो टेल ऐसी हो जाती है कि आपका आईपीओ प्राइस जो आपका फेलेसी चलता है, दैट इज द संक कॉस्ट, वट एवर प्राइस एंकरिंग बायस आ जाता है कि आपने प्राइस, मैंने तो इतना पे किया था, अभी तक जब सीएमपी आएगा तब मैं सेल करूंगा, तो वो टेल बढ़ता ही जाता है. तो investing in 50 or 80 companies is not good. We believe doesn't make any sense. अगर आपको 25-30 companies है, then it is good. फिर then उसके बाद में आप every extra company buy करोगे, so the purpose will not serve. The purpose of the diversification is only and only to avoid the risk. As Ali bhai said ना, कि we are into the business of mitigating the risk. The returns are always the byproduct. बट अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन जो है वो 30, 40, 50, 60 स्टॉक्स कर दिया, then the purpose will not be served. So this I like most, and it is taken from the book Tell You Win. Okay, so this is the Tell You Win. This is the one of the best aspect. The people says कि यार हमने investment किया, what they used to consider या benchmark yourself, that they do benchmark themselves with the each and every stock कि यार मैंने ये stock में investment किया था assume 1000 rupees में, but it is at the rate of say आज 600 का है, 40% loss हो गया ना, I'm not good in the investment. Okay, but investing is always a tail event in the sense it is the cumulative effect of the whole investment. You need to value your investment per se on the portfolio sizing. नहीं, आपको आपका वैल्यूएशन या बेंचमार्क के सामने है, वो आपको पोर्टफोलियो को देखना है, नॉट अ सिंगल स्टॉक. दैट इज व्हाई द पीटर लिंच सेड कि इफ यू आर इन द बिजनेस, टेरिफिक इन द बिजनेस, देन यू आर राइट 6 टाइम आउट ऑफ द टाइम. अगर आप 10 में से 6 बार भी अच्छे हो गए, देन यू आर गुड फंड मैनेजर. And this liberty you do not have in any other profession. For example, if you are a doctor, वहां पे आपके पास लिबर्टी नहीं है कि 10 में से 2 सर्जरी आप गलत कर दोगे तो भी चलेगा. If you are a pilot, then also you do not have the liberty कि 10 में से एक बार क्रैश भी हो गया तो चलेगा. But if you are a good fund manager or if you are an investor, Ali bhai, you are on mute. I'm saying the pilot example is a sensitive topic nowadays. So many air crashes happening. So मतलब वहां पे आपके पास, but if you are an investor, तो you have the liberty कि भाई आप 10 में से 2 बार 3 बार फेल भी हो गए, आपके 3 आईपीओ 3 फेल इन्वेस्टमेंट थीसिस फेल हो गया, देन आल्सो यू विल मेक द लॉट ऑफ मनी बिकॉज द डाउनसाइड विल बी द जीरो. मैक्सिमम डाउनसाइड कैन बी द जीरो. assume का 10 rupees allocated to the 10 stock, the maximum downside for the 3, assume कि 3 stocks आपका गलत इन्वेस्टमेंट हो गया, then the maximum downside will be the zero, but the maximum upside is the sky.
So investing is always a tail event, and whenever you are looking to the performance of the portfolio, you'll performance of your own, or evaluating any performance of any fund manager, you analyze on the basis of the portfolio rather than evaluating on a single stock on the single investment. And the last one is the reasonable is very greater than rational. What we feel that the investment in the सर्कल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू बी द रीजनेबल. आपको रेशनल होने की जरूरत नहीं है. रीजनेबल वर्सेस रीजनेबल मींस ओके, आई विल बाय अ कंपनी जहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी, गुड रिटर्न ऑन इक्विटी. और इट इज नॉट लाइक दैट कि नहीं, आई विल बाय ओनली अ कंपनी जहां पर रिटर्न, जो रिटर्न ऑन 20% रिटर्न ऑन इक्विटी बनाता हो. So what will happen in that particular case? If any company is making return 19% return on equity, then you will not buy the same. Because my theory, I am the very rational कि नहीं, मुझे 20% वाली ही कंपनी चाहिए. So in investing, you have to be the reasonable. There can be the situation जहाँ पे 14% रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो सकता है, या 10% भी हो सकता है. मे पॉसिबल अभी जो एनबीएफसी जो है जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी है, but they have the future also, the lies of the future also कि in the next coming 1 or 2 years they'll make the good amount of money, because whatever the personal finance और जो stress जो था वो now that is going out. So आपको evaluate करना on the basis of the reasonability rather than the rationality. And we follow the approach of the TVM in the investing. The TVM and everything is the reasonable. That means first of all, the reasonable with regard to the tailwind in the industry. Second one, the valuation has to be the reasonable. And third one is the management also to be the reasonable. हमको गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट, यू विल नेवर फाइंड एनी गोल्ड स्टैंडर्ड मैनेजमेंट कि मुझे तो एचडीएफसी जैसा ही मैनेजमेंट चाहिए, उसके अलावा मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. यस, विल फाइंड अ मैनेजमेंट विच इज गुड, रीजनेबल है. हाँ, जो कोई कभी हैंकी पैंकी अभी तक कुछ किया नहीं है, देन इट इज बेटर टू गो विद दोस पर्टिकुलर मैनेजमेंट. फॉर जस्ट टू गिव द एग्जांपल, सिंजिन वन ऑफ द इंडिया का सबसे बड़ा सीआरओ था, कॉन्ट्रैक्टर अभी भी है, सीआरओ कंपनी है. बट द व्हेन यू लुक एट द मैनेजमेंट, जहां पे क्या था, आई थिंक जोनाथन हंट जो अभी चल लास्ट 10 साल से जोनाथन हंट ही वाज डूइंग विद ही वाज लीडिंग द सिंजिन. ओके, और उन्होंने मैंगलोर फैसिलिटी में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया. जो साई लाइफ साइंस ने 200 करोड़ की फैसिलिटीज है, 200 करोड़ के एक्सपेंडिचर से ही वो पूरा उतना बड़ा सेटअप किया जो सिंजिन ने 1000 करोड़ के अंदर किया था. The management, the Syngene management was very professional. Jonathan Hunt was very professional. Sai Life Science Management is the Honored River Company, private company थी जहाँ पे management reasonable था. But they were on the keen कि नहीं, हमको 100 से 200 करोड़ के अंदर ये काम हो जाएगा. Then why to go with the 1000 crore expenditure? So हमको भी investment में we need to find out, we need to be very reasonable. हमको उसी तरह का management चाहिए जो reasonable है, rather than कि gold standard है. So it is motamotically we have covered the behavioral part. Nimish bhai, you want me to consider the financial part or I think on behavioral front, first if Naveed bhai you are also on कि यार कुछ और पूछना है आपको, so inputs you have something in this. आई थिंक कुछ इनपुट्स है, मतलब जो कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए. फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल भाई, रियली गुड चॉइस ऑफ टॉपिक्स. आई थिंक सारे टॉपिक्स बहुत ही रेलेवेंट है, एंड बहुत ही अच्छे से आपने द वे यू हैव पुट इट अक्रॉस, द मैसेज वाज डिलीवर्ड वेरी नाइसली, एंड वेरी गुड चॉइस ऑफ टॉपिक्स फर्स्ट. तो उसके बाद मतलब आई वांट टू ऐड अ फ्यू पॉइंट्स. पहला टॉपिक जो आपने बात किया कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी कॉन्ट्रेरियन. तो वहाँ पे देर इज वन वेरी गुड कोट बाय सेथ क्लारमैन कि अ गुड इन्वेस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्ट्रेरियन एंड अ कैलकुलेटर. मतलब समवन हु इज रेडी टू गो अगेंस्ट द टाइड, बट एट द सेम टाइम ही इज एक्सट्रीमली नो कैलकुलेटिव अबाउट व्हाट ही इज डूइंग. समझ रहा है कि मुझे पता है कि मैं अगेंस्ट द टाइड जा रहा हूँ, बट मुझे पता है कि आई हैव माई थीसिस, आई हैव माई ग्राउंड जिस पे मेरा पैर टिका हुआ है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड आई थिंक एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि हम एक ऐसी फील्ड में है जहाँ पर इट इज़ पॉसिबल फॉर अ वेरी नॉर्मल पर्सन टू बीट एन एक्सट्रीमली क्वालिफाइड पर्सन. मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट एन ओपन हार्ट सर्जरी, और इफ़ यू टॉक अबाउट, जैसे कि आपने बताया कि फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट, a normal person can not beat a professional who has tons of experience.
But in investing, even a normal, investor or a new novice investor can beat someone who has tons of experience, who has been running this, who has been into this profession for years. And I think Morgan Housel in his books have given very good examples जहाँ पे ये चीज़ निकल के आती है कि एक नॉर्मल इंसान ने एक बहुत प्रोफेशनल इंसान से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया. एंड जनरली कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग की जब बात आती है ना, तो हम इंटरनली वी फॉलो वेरी वेरी क्रूड, वेरी सिंपल एक्सरसाइज. हम जनरली क्या करने की कोशिश करते हैं एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर और एट द एंड ऑफ जनरली क्वार्टरली बेसिस पे हम ये करते हैं कि वी सिंपली चेक कौन सी कंपनीज ने पिछले 3 साल में और पिछले 5 साल में फिक्स्ड डिपॉजिट के रिटर्न्स को भी बीट नहीं किया है. Right, we just simply do that test. I understand it's only price driven, etc., and it has its own flaws, but just to screen हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं. And you won't believe, अगर आप ये चीज normally every quarter करते चले जाएंगे, the kind of names that will start flashing in your face, you will be amazed to look at those names. And कई बार उसमें बहुत अच्छी opportunities हमने spot कर लिया. So that is what I wanted to share on the contrarian part. बाद में आपने बात की सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 थिंकिंग की, जो डैनियल कैनमैन की बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्कस की है. तो आई थिंक यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हमें हमारा माइंड जनरली दिया क्यों गया है. तो आई थिंक आवर माइंड इज गिवन टू अस टू सेव अवर सेल्स. हमारा दिमाग हमें बचाव करने के लिए दिया गया है. तो जो सिस्टम 1 की हम बात करते हैं कि इट्स फ्लाइट और फाइट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो हम देते हैं कि भाई या तो लड़ो या तो भाग जाओ. बट इन्वेस्टिंग में समटाइम्स यू हैव टू गो टूवर्ड्स व्हाट लुक्स डेंजरस बट इज नॉट एक्चुअली डेंजरस. तो वो एक जो अपना नॉर्मल टेंडेंसी है दिमाग की वर्सेस जो इन्वेस्टिंग की डिमांड है हमसे एज एन इन्वेस्टर, वो उसका डिफरेंशिएशन कई बार समझ पाना मुश्किल हो जाता है. तो आई थिंक दैट इज समथिंग विच आई वांटेड टू ऐड देयर. बाकी सर्वाइवरशिप बायस की आपने बात की, उसमें आपने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए कि हाउ टू सेफ गार्ड योर सेल्फ. आई थिंक वन वेरी गुड अप्रोच दैट वी यूज इंटरनली इज कि हम जब भी किसी भी कंपनी को स्टडी करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, what we do is we develop a list of 5-7 key performance indicators. एंड वो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स खाली वेग नहीं होते कि भाई ग्रोथ इन एक्स वाई जेड पर्टिकुलर सेगमेंट. वी ट्राई टू असाइन अ नंबर टू इट कि इस तरीके की ग्रोथ हम लोगों को देखनी है. एंड वी ट्राई टू क्वांटिफाई इट एज मच एज पॉसिबल. सो व्हाट हैपेंस इज एज एंड व्हेन वी ट्रैक दोज कंपनीज फ्रॉम क्वार्टर टू क्वार्टर, हमें भी एक हमारा रियलिटी चेक मिलता चला जाता है कि हमारी इनिशियल एक्सपेक्टेशन ऐसी थी एंड vis-a-vis that expectations कंपनी ने किस तरीके से डिलीवर किया है. तो आई थिंक डेवलपिंग अ लिस्ट ऑफ KPIs एंड कंटिन्यूसली ट्रैकिंग देम is a very helpful tool to fight against that survivorship bias. बाद में आई थिंक यू ऑल्सो टॉक्ड अबाउट sunk cost. तो हमारे एक बहुत सीनियर इन्वेस्टर है जिनको हम लोग बहुत एडमायर भी करते हैं एंड ही हैज़ बीन रियली सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग. तो वो हमेशा हम लोगों को बोलते हैं कि वंस यू हैव परचेज्ड द स्टॉक, रिमूव द बाइंग प्राइस का कॉलम फ्रॉम योर एक्सेल शीट. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू एनालाइज that particular business at that particular price. I think Utpal Seth, when he was talking about Rakesh sir's, investing journey, he said कि sir bought Titan at 70 rupees also, and I think he bought it 25x higher as well. So ये जो टेंडेंसी है वो कैसे आती है जब आपने बाइंग प्राइस को अपने एक्सेल शीट से बाहर निकाल दिया है. यू आर ट्राइंग टू एनालाइज द बिजनेस एट दैट वेरी डे, और वो एनालिसिस के बेसिस पे जो प्राइस आज मार्केट में है क्या वो रीजनेबल है या नहीं. अगर आप इसी पे फोकस करें हम एज इन्वेस्टर्स, आई थिंक दैट कैन हेल्प अस विथ अ लॉट ऑफ सunk कॉस्ट. इसके लिए एक थियरम भी कहते हैं जिसको कहते हैं बेस थियरम, जो हमें कहता है कि जैसे ही हमें एक नई इंफॉर्मेशन मिले, वी हैव टू ट्राई एंड प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन एंड ब्रिंग चेंजेस इन आवर स्टांस इफ रिक्वायर्ड. तो कई बार हम वो भूल जाते हैं कि नई इंफॉर्मेशन तो आती रहती है,
बट हम हमारा स्टांस को शायद वो इन्फॉर्मेशन के साथ चेंज नहीं कर पाते. आई थिंक इट्स ट्रू फॉर ऑल इन्वेस्टर्स, तो इसमें कोई वो नहीं है. Navid एंड bhai, I'll just take a few. I'm sorry to cut you. Ali bhai has another meeting after a few time, after a few minutes. ओके. So I have one question for each one of you. So what is one non-negotiable thing for you when you invest? कि यार ये अगर देख लिया तो मुझे देखनी ही नहीं है कंपनी. सो एनीथिंग लाइक वन, आई जस्ट वांट वन पॉइंट जो आप सोचते हो कि यार ये कंपनी में कभी देखा मैंने, सो आई नॉट गो, और मेरे को तो उसमें डिटेल में भी नहीं जाना है. एनीथिंग विच यू वांट टू से फॉर ईच वन ऑफ यू. I think it's a very obvious thing for me. And if I find any flaws in the management, where the management has done anything that's not conducive, or nowadays you find a lot of management giving you long tails also. We will grow 40%, we will grow 50%. But the fact is you're not able to grow. And these are managements of big companies, sometimes even sector leaders. So then after that, once that trust is lost for me, I don't go near that company again. It's a very obvious point, but just to state it. नवीद भाई. I think Ali Bhai has covered the management aspect. I think barring management, one thing which I am very much wary about is presence of high leverage. मतलब अगर आप कुछ भी देखो past में, you look at all the accidents that have taken place. I think in most of the cases you will find presence of leverage being the culprit of the damage which has happened to the investors. तो मैनेजमेंट तो है ही है, बट प्रेजेंस ऑफ लेवरेज मुझे जहाँ पे बहुत ज्यादा दिखता है, आई जस्ट स्टे अवे, क्योंकि पास्ट में आई हैव मेड दैट मिस्टेक एंड आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे. तो मैनेजमेंट तो नॉन नेगोशिएबल है, दैट इज रीजनेबल मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए. सेकंड थिंग व्हाट वी लुक इज दैट इज द फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज, की जो करंट बिजनेस है एंड द फ्यूचर बिजनेस जो है. सो वी जनरली फाइंड आउट द कंपनी जो वहां पे कैपेक्स कर रही है, फ्यूचर के अंदर कैपेक्स कर रही है, एंड द फ्यूचर कैपेक्स में द जो फ्यूचर का जो कैपेक्स है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द चेंजेस. फॉर एग्जांपल एनी कंपनी जो है वो अभी कोई पर्टिकुलर कंपनी जो है वो उसका बेस बिजनेस है, तो वो बेस बिजनेस से कितना चेंज कर रही है, एंड व्हाट द डिग्री ऑफ द चेंजेस एंड व्हाट द क्वालिटी ऑफ द कैश फ्लोज दैट विल जनरेट. सो वी कंसिडर दैट कि फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज क्या हो रहा है. अगर फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज सेम लाइन ऑफ बिजनेस में नथिंग चेंजेस, क्वालिटी ऑफ अर्निंग इंप्रूव नहीं होने वाली है. अमाउंट ऑफ अर्निंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ अर्निंग. जस्ट आई टॉक कि लोरस जो था फॉर अगेन फॉर एन एग्जाम्पल, वो एआर जो कैश फ्लोज उसका 65% 70% एआरवी में से था, वो क्वालिटी ऑफ अर्निंग वो चेंज करने वाला है. वो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन एआरवी बिजनेस में कर रहा है. Again, 5,000 crore investment they have gone for the next 3 years, and that is 90% of the investment is for the non-ARV business. So quality of earning, what is the quality of future earning that we consider? Yeah. A very pertinent example to that is also right now Piccadilly Agro, for example. They are going from their distillery business they're going from their sugar business into distillery business, and within distillery also more focus on IMFL, so that they're basically going up the value chain. And market really rewards that in a big way. I remember even last quarter, for example, their mix wasn't much. So from 55% of distillery business, unka wahi 55% hi raha. And the whole last quarter was a washout, basically. Now, 3 days ago, they declared results again where their distillery contribution from 55, 56 went to 71. So now I'm expecting a good quarter going ahead. That's I We think a we very also tracking it very closely, this stock. And the 1,000 crore जो 18 जो 12 KTPL से 24 होने वाला है प्लस डिस्टिलरी. एंड द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू ऐड इन दिस इज दैट वो वाला जो बिजनेस है, सो इफ यू IMFL जो उनका खुद का IMFL है, सो द कंट्रीब्यूशन मार्जिन इन IMFL इज द ग्रोस मार्जिन दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट. सॉरी, EBITDA मार्जिन इज हाई एज दैट 39 to 40%. वो कोई भी दूसरी कंपनी का नहीं है मतलब. बट जनरली क्या होता है, पीपल ब्रॉडली लुक कि टोटल सेल्स कितना बढ़ा है, क्या हुआ है, दे नेवर गो इनटू द डीपर के सेगमेंट में वापस से खुद का So this IMFL. is the trigger for the market. With this Piccadilly stock, this is the trigger that how much are they able to shift from their sugar business. We all know it's highly commoditized and a lot of government intervention during election. They will tell you can't sell it for so much, this, that. Yeah, and see rains also. So how much they shift up to their own brands
And owning your own brand is actually quite prestigious. And nowadays they say that a lot of the foreign brands are also getting replaced by our own Indri whiskey abroad also. So I mean, good things Yes. to look forward to. Last time they made Indri for Dubai, especially last Yeah. quarter. Like, No, they are so that making is the all kinds of league. things. Even Game of Thrones edition they are having, and all kinds of, they're Even mixing That is even culture, they're mixing pop culture with that, which is very good. recently in India, what I am, seeing across companies or across industry, now Indian companies wants to go global, and they are doing a lot of other things which it's a very small things. अगर हम कल महिंद्रा का अगर आप if you see the live event, they are more focused कि हमको global जाना है, and they started with BE6 का 300 ही उन्होंने start किया 300 BE6E this Batman edition, and that Batman edition is just for the global global folks to attract on to. तो मेरे हिसाब से there are a lot of companies now in India is focusing to go global, and अभी बहुत मतलब we are at just a basic, and now like government is pushing कि make in India and all things. I think sooner or later जो companies on the इस पे top पे रहेगी वो ऑलरेडी आई थिंक स्टार्ट होने लग गई है, एंड वी नीड टू ट्रैक थिंग्स क्लोजली कि यार कौन कौन सी कंपनीज है, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज मार्केट अवेलेबल ग्लोबली फॉर इंडियन इंडियन क्रिएटर्स और इंडियन कंपनीज जो वहां पर क्रिएट कर सकती हैं बहुत बड़ा क्योंकि अगर आप देखोगे तो जितनी भी और दूसरी कंट्रीज हैं, चाहे वो हमसे जो इमर्जिंग मार्केट्स में नीचे हैं, चाहे जो डेवलप्ड हैं, वहां पर एक बहुत बड़ा गैप है जो डेवलप्ड हो चुकी है, जैसे यूएस एंड यूके जो अब वापस से यूएस नाउ इज मोर थिंकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ड्रिल ड्रिल और वो सब बात चल रही है। चाइना के अलावा अगर आप देखेंगे तो कोई सी भी कंट्री ऐसी नहीं है जो दे आर नाउ मोर फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग, बाकी सारी कंट्रीज हैं। तो मेरे हिसाब से इंडिया इज एट अ वेरी गुड जियो पॉलिटिकल जो डिस्ट्रप्शन हुआ है उसके कारण इंडिया की कंपनीज को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इफ दे आर एबल टू कैप्चर द मार्केट with the quality standards and with the quality products. You're right. Guys, on that note, I'm going to call it quits because I have another meeting to rush into. It's been a pleasure. Absolutely. I've learned a great deal. Thank you so much for the presentation. Very relevant topic. I wish you well for the rest of the show. Thank you so much, Ali bhai. Thank you. Bye.